right? It is a scalar without bracket. This UTV, this one, this is called the inner product. Inner product of U and V. This is called inner product of U and V. Understand? And now you just go to class 11th. Right? In class 7th, you have this one vector A, A1I, A2J, and A3K. Right? And then you have B, B1I, simply B2J, and B3K. And you know about the dot product of this. What is A dot B? A dot B is simply A1 B1, A2 B2, and A3 B3. Now you can compare it, right? Means this is simply the generalization of this dot product. And in dot product, you have so many things. A dot B is AB cos of theta. This is modulus of this, and this is also absolute value of this. And this is cos theta. Theta is the angle, right? Angle between these two vectors. So when we study the inner product, so we should study about this theta, and exactly not the angle between the vectors, but the main thing what we need in our means, for higher studies, that is the set we have in vector spaces are linearly independent sets, right? In vector space you have a basis, and basis is the linearly independent and linear span, and this linearly independent set has some problems. What type of problem? When you introduce any other scalar, you have to find out, because you know that ai xi, right? This is equal to 0, and if suppose I is equal to 1 to n, you have n number of equation, and you have to calculate a1 a2 an differently, and it is not very easy to calculate. But when we convert this linearly independent equation in orthogonal set, or orthonormal set, after orthogonal, no, orthonormal set, then it is very easy to calculate this ai. So that is the reason. Means what are the orthogonality? First we go through this simple inner product, and then this orthogonality. And orthogonality, you know about the advantage of orthonormal set over linearly independent set. But before that, I am just going to define the inner, what is the inner product space. So this is the simple inner product. This just revision. If U and V are the two vectors in Rn, then we regard U and V as n by 1 matrices, and transpose of ut is 1 by n matrix. And this, if we multiply this ut with V, we get 1 by 1, and 1 by 1 is nothing but a scalar without bracket number utv. This number utv, this is called the inner product of u and v. Okay, understand? So should we go further for inner product? Yes, sir. Abhi, Akhi? अब देखिए, now we go for the definition.
एज सच जो हम आपको बता रहे हैं इसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी हम बोर्ड जैसा पढ़ा रहे हैं, बोर्ड का जो आनंद है वो ले रहे हैं। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस से पहले हमने आपको बताया कि यू मस्ट नो अबाउट द वेक्टर स्पेस, right? Because when we define any function, this inner product, it is on uh, some vector space over f, right? So inner product is this is a simple sign of inner product. And what is this inner product? All these are the functions. This is the function from where, from v cross v to f. F means maybe field, R or C, whatever you want, you can get. So this it is a function from V cross V to F, and this is if this function satisfies certain conditions. This is the simple definition of space. Also, I will tell about it. What are the conditions? Conditions are simply AU plus beta V comma W is equal to AUW plus beta VW। दोनों चीजें देखी हो गई, लीनियरिटी आ गया ना, दिस इज लीनियर, पहली कंडीशन। देन यू हैव दिस वी यू यू वी। what is this? This is the conjugate symmetry, right? Conjugate, why I am taking conjugate symmetry? Because of this C. If R is there, then simple symmetry. This is the conjugate symmetry, right? And this you all know that V is always greater than 0, right? And if this V is equal to 0, this implies that V is equal to 0. If this is equal to 0, then V is equal to 0. Vector space V over F together with this inner product. This is called the inner product space. Matlab this V together with this. But this is the vector space, not the set. Okay. This is already a linear space, vector space. So we can define any space like this. Listen, suppose we have to define a class as a space. Right? Suppose this is a class of MSc final student. Right? So how we define it this class as a space? So first you must have the this V like vector, right? Set set of all students, and then they satisfy the certain condition. Right? They must pass MSc first semester, first and second semester. They must be the student of that college or university, and one more, they must be enrolled with, deposited their fees. So these are the conditions. Right? When these conditions are satisfied, then it becomes the space of MSc final student. So in space we have the simple this meaning. So this is the inner product space. What is inner product space? This inner product, it is the inner product from V cross V to F. Linear, conjugate symmetry, and positivity. Then we said that this is the inner product, and when this inner product is taken as with this V, then it becomes the inner product space. There are so many examples you have, I think you have done in your BSc classes also. Uh, when with this U and V, we have taken Rn. First one is this U. If you take U is equal to A1, A2, An, right? And simply V is equal to B1, B2, Bn. Right? Then this inner product UV
is defined on Rn. So Rn with this inner product, or inner, what is the inner product that I already told, that A1 B1 A2 B2 A3 B3 and so on. So this is an inner product usually known as the Euclidean space. This is known as Euclidean n space. And when we talk about the complex number, when this is real, then it is called Euclidean. And when we take C, then it is called unitary space. Okay. So now some this is example for Rn, and simply this is example for Cn. So Cn is unitary, and Rn is Euclidean space. And then you can take so many examples of this. Simply go for the R2 or R3, right? And you have some standard inner product on R2 and R3. This is the standard inner product on Rn. Simply you have which one? This U dot V. No, U V. This is A1 B1 A2 B2, right? A3 B3 and so on. AN BN. This is the standard inner product on Rn. Suppose you have to find the standard standard inner product on R2. So what is in R2? You have simply this A1 B1 A2 B2 and A1 B1 plus A2 B2. Now you can also suppose you take R2, then you can find whether it is an inner product or not. Right? And it doesn't matter, only the standard inner product are not possible. There are so many inner product you can define on R2 or R3 or Rn. But standard inner product is this one which we write up, write like this. Okay. Now how this inner product, because you are studying inner product after the norm, right? It means there is some relation between norm and inner product. So what is the relation between the if V is an inner product space, right? If V is the inner product space and X is any element of this V. So what is the relation? Because the norm, what is the norm? Norm is simply the length. This how this X is related to inner product. This is related to inner product by this. This, this is the inner product. Right? Means how inner product is related with norm. Norm is this is the relation between the norm and inner product of vectors. So you know the definition of norm also. What is the norm? Norm, you have positivity, then homogeneity, and last one is the triangular inequality. Okay, you have three conditions, then it becomes a non-linear space. And distance. This is the norm. Before that, I will tell you one thing. आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बताते रहिए। Yes, sir. You are audible, sir. हाँ, हम बोलते रहें और आपको सुनाई ना दे। नहीं, हम आपको ये बताने जा रहे हैं थे कि जब आप इनर प्रोडक्ट को, हमने कहा ना, एक वन इज स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट,
and there may be inner product which are not the standard, but they are the inner product, right? Okay. Now you just see one example of it, and whenever you see the example we give in R2, because you can better understand, right? So suppose x is x1, x2, and this is y. Y is y1, y2. These are the two vectors belonging to R2. And now I'm defining the inner product, right? All of you have one notebook or not? सबके पास Yes, एक sir. कॉपी पेंसिल है ना? ठीक, कॉपी पेंसिल है तो हम आपको ये दे रहे हैं, आप इसको जल्दी से हमें बताइएगा कि ये इनर प्रोडक्ट है कि नहीं, राइट? मतलब यू हैव टू चेक x1 y1 माइनस y2 x1 y1 x2, and suppose this is 3 times y2 x2. 3 है, this is 3. Now you have to check one by one. First, what you have to check, this x is greater than 0 or not. Now check it. What is x? X1 x1, and this is x2 x1, this is x1 x2, last is 3 x2 x2. Okay, you get x1 square minus 2 x1 x2 plus 3 x2 square, or you can just write x1 minus x2 का whole square plus 2 x2 square. Understand everyone? बात समझ में आई सबको? Yes, sir. देखिए Yes, sir. ये अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब दिस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ओके, इसका मतलब जो पहली कंडीशन थी इसकी वो ये सेटिस्फाई कर रही है. अब जब आप x और y को बदलेंगे तो कोई बात है ही नहीं. ये आपने एक्स वाई निकाला है ना, तो जब हमें वाई एक्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? निकालेंगे वाई एक्स, और आप देखेंगे वाई एक्स निकालेंगे ये बस इधर उधर हो जाएगा और तो कुछ होना नहीं. नहीं, ये हो गया y1 x1, ठीक, माइनस x2 y1 माइनस x1 y2 प्लस 3 x2 y2 है वो सही. तो क्या है कि आपने देखा कि अगर ये R2 के एलिमेंट थे तो एक्स वाई जो है इसके भी बराबर, ठीक. और तीसरा जब आपको प्रूव करना होगा तो यू कैन टेक वन मोर, राइट? वन मोर मीन दिस z1 z2, सिंपली यू x प्लस y कॉमा z इज इक्वल टू xz plus yz. This is complete, right? You can check it also. So why I am giving this example? I am just giving this example that this inner product is something more than the dot product. Understand? This is something more than the dot product, because if you take dot product of this, then you have just x1 y1 plus x2 y2, only this one, right? X dot y is only this one. This is the only standard inner product defined on R2, right? But you can define a number of inner product on this R2. One example is given, I am giving this one. So you can simply take R3 also, right? Or on R2 you can define so many inner products, right? You can define so many inner product on R2.
Now, how this inner product is related with the norm? See, the inner product, an inner product on any x on x generates a norm on x. ठीक? This generates a norm on x, and this norm I have already given this one. Right? This is generated by this, and a metric on x. Right? Metric on x. What is the metric on x? Metric on x is the simple dxy is equal to norm of x minus y. Understand? And what is this? This is x minus y. X minus y 1 by 2. Just take the bracket. Right? This is the relation. I think everything must be uh, clear. What? This, that how they are related. Right? There are conditions when inner product space is Banach space, inner product space is norm space, right? Every inner product is a norm space, but every norm space is not an inner product space. Simply in case of Hilbert spaces, every Hilbert space is Banach space, but every Banach space is not an Hilbert space. So you have uh, four condition in norm also, right? You have four condition in norm also, and that condition you I think already know. Now we come to orthogonal vector. Okay? This is the main concept which is lacking in the norm spaces, and we want to learn this in inner product space, right? Because you are the student of MSc final maybe, so you know about Banach and Hilbert spaces. Just I am taking the basic concept and the questions which can be asked in your CSIR examination, right? So what is orthogonal vector? The when two vectors are orthogonal, right? If U V belongs to Rn, then कहते हैं, if inner product is 0, then vectors are said to be orthogonal. The same as in dot product, right? What is A dot B? This is A B cos of theta, right? A dot B is A B cos of theta when this theta is 90 degree. Then what happened? Cos 90 is 0, A dot B is equal to 0. Simply it is transformed in inner product space. Means if inner product of two vectors are 0, then the vectors are said to be orthogonal. Okay. And beside this orthogonal, we have one more thing, that is bi-orthogonal vector. This must be, I think, not given in the book. Bi-orthogonal. Because in PK Jain, Lime, Chaudhary Nanda, it is not given. What is bi-orthogonal vector? Suppose this U1, U2, or you can take UR, and V1, V2, VR. ठीक ठीक है, these are the two ordered set of vectors. कहता they are said to be bi-orthogonal if when this ui vj inner product this is equal to del ij. Okay, ij 1 to r, ij is equal to 1 to r, and you know about this del ij. What is this del ij? बताइए.
This del ij is the conical delta. This is equal to 1 if I is equal to j, and this is equal to 0 if I is not equal to j. Okay. If this uivj is equal to del ij, then we can say it is bi-orthogonal vector. Okay. This is u and this is v. So this is orthogonal and this is the bi-orthogonal. This del ij has a very important role when we in geometry, when we go from Euclidean geometry to Riemannian geometry, right? Right. This chronicle delta has a great role when we go from you know what the distance between 2 points is simply given by ds square is equal to del ij dxi dxj, right? Is del ij 1 2, or if you take 1. So if 2 points are given, you get the distance, simple distance x1 minus x2 ka whole square plus y1 minus y2 ka whole square. You know this is root of this, right? Simply this one. And but Riemann, what Riemann does this, he replaces is by del ij by gij, right? Otherwise, you have four components here. If this is not the Euclidean geometry, then you have the four components. So this is the simple. I am telling about the del ij. Then you have the simple Pythagorean theorem. Pythagorean theorem for inner product. Now look at this is u plus v whole square. If you write what is it, u plus v, and uh, if u and v are the orthogonal vectors, orthogonal, then what happened? This is simply uu, right? uv v vu, and last you have v v, and this is equal to 0, and this is also equal to 0 because they are the orthogonal, and simply you get this norm of u square, and this is norm of v square. This is simple the Pythagorean identity. You know about the Bodhayan Pythagoras theorem. Bodhayan has given this theorem in 3000 BC in Sul Sutras, right? In Sul Sutras, yeah, Bodhayan. And Pythagoras also admits that he get the formula or the formula of this theorem from one rishi of Indian origin, and that rishi is Bodhayan. Right? Bodhayan. There are so many sutras are there in our Vedang Jyotish. Bodhayan, Katyayan, Manav, and nine of them we know about it. So, so you get the angle between two vectors, right? U is norm of v, cos of theta. Okay, so you can just go for this simply orthogonality. So orthogonal vectors are when u and v are uh, inner product of u and v are 0. Okay. Now, what is orthonormal set? Right. Now we tell about the orthonormal set. Uh, when the set is said to be orthonormal, suppose this is the set u1, u2, and un. Okay, this set is said to be orthonormal if two things. One, this is orthogonal. Orthogonal set means ui uj is equal to del ij, right? Del ij means 0 if
I not equal to j, and 1 if I is equal to j. Okay. So this is said to be orthogonal. And when each of this vector means norm of ui is equal to 1 for all I belonging to, if you take an n, then I is equal to 1 to n. Means if the set is orthogonal, orthogonal means each of vectors are perpendicular to each other. They are mutually perpendicular, mutually orthogonal, right? Then this set is said to be orthogonal set. And when each of vector is of unit length, then it is said to be orthonormal set. And this orthonormal set has great importance, right? And why great importance? I will tell you how this orthonormal set are very much beneficial and have advantage over the linearly independent set. Right? There are so many fundamental concepts I just not given here. One is the parallelogram identity, right? Parallelogram equality and polarization equality. That parallelogram equality relates between the norm space and inner product space. When the norm induced by an inner product on a linear space X satisfies parallelogram equality. Parallelogram equality, you know, x plus y square minus y square. This is equal to 2 times Norm of x square plus norm of y square. नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ये सिंपली वही है जो आपने समांतर चतुर्भुज में पढ़ा था बचपन में ना, कि विकर्ण का वर्गों का योग जो है भुजाओं के वर्गों के योग के 2 गुने के बराबर होता है। ठीक, यही पैरेललोग्राम इक्वालिटी जो आपने पहले पढ़ी है वही यहाँ भी आपको इस फॉर्म में बताई जा रही है। ठीक, लेकिन हमने आपको क्या बताया कि ये हम बता क्यों रहे थे? हम इसलिए बता रहे थे कि इसका पैरेललोग्राम आइडेंटिटी जो है ये रिलेट करती है इनर प्रोडक्ट और नॉर्म को। नहीं कि कोई इनर प्रोडक्ट जो होगा कहता है नॉर्म ऑन लीनियर स्पेस एक्स इंड्यूस्ड बाय एन इनर प्रोडक्ट ऑन इट इफ एंड ओनली इफ द नॉर्म सेटिस्फाइज द पैरेललोग्राम इक्वालिटी। मतलब अगर पैरेललोग्राम इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो इनर प्रोडक्ट होगा, अगर नहीं करेगा तो इनर प्रोडक्ट नहीं होगा। तो किसी बनाक स्पेस को हिल्बर्ट स्पेस होने के लिए, ठीक, पैरेललोग्राम इक्वालिटी को सेटिस्फाई करना आवश्यक है। अगर पैरेललोग्राम इक्वालिटी सेटिस्फाई होगी तो वो बनाक स्पेस जो होगा हिल्बर्ट स्पेस होगा, अदरवाइज वो हिल्बर्ट स्पेस नहीं होगा। ठीक है, और आपने उसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे पहले से पढ़ रखे हैं। ठीक, अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं कि हमने बताया आपको कि ये ऑर्थोनॉर्मल सेट जो है ये हमने बना लिया। अब ये किसी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को कैसे ऑर्थोनॉर्मल सेट हम बनाएं? linearly how the linearly independent set can be converted into a orthonormal set. ओके, तो क्योंकि इसी का अच्छा एक चीज और कहता है जो मैक्सिमल ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है, जो मैक्सिमल ऑर्थोनॉर्मल सेट है कि इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, वो कहलाता है कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। ये चीज हम शायद भूल जा रहे हैं बीच बीच में। कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या है कि ऑर्थोनॉर्मल सेट है मैक्सिमल। ठीक, मतलब मैक्सिमल का मतलब समझ गए, बताएंगे? दिस इज मैक्सिमल ऑर्थोनॉर्मल सेट। बताइए कौन बताएगा मैक्सिमल ऑर्थोनॉर्मल सेट वाली बात? रेशमा वर्मा, आवाज आ रही है?
रेशमा वर्मा, सुनाई दे रही है आवाज मेरी? यस सर, यस सर। हाँ बताइए। ये मैक्सिमल ऑर्थोनॉर्मल सेट वाली बात समझ में आई कि कोई ऑर्थोनॉर्मल सेट मैक्सिमम कब होगा? देखिए हम बता रहे हैं, कहता है ये हमने ऑर्थोनॉर्मल सेट बता दिया, कहाँ गया? ये जो है U1 U2 UN एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ठीक, ऑर्थोनॉर्मल मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये UIVJ इज इक्वल टू डेल IJ के बराबर और नॉर्म ऑफ UI इज इक्वल टू 1। कहता है कि अब अगर इसमें ये पॉसिबल ना हो कि हम कोई भी और वेक्टर इसमें ऐड कर सकते हो, मतलब अब जो इसमें वेक्टर ऐड होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, समझ गए? तब वो जो ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाएगा। ठीक है, और जो ये मैक्सिमल ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है वो कहलाता है कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो ये ऑर्थोगोनलिटी जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, इसमें आप किसी अच्छी बुक में देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइजेज वगैरह दी हैं ऑर्थोनॉर्मल के लिए। ठीक है, तो अभी हम प्रोजेक्शन वगैरह नहीं बता रहे, हम सीधे आपको केवल ऑर्थोनॉर्मल सेट के बारे में ही बताएंगे। पहले पहली चीज एक चीज और देख लीजिए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट ओवर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। यही मेन, क्यों हम कोई भी चीज जब पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज नहीं। ये हमें अगर पता होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो हम क्या आपको बता रहे हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, तब फिर हम आपको बताएंगे कि इस एडवांटेज को देखते हुए कैसे ग्राहम स्मिथ ने ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस बताया, और उसका फिर आपको एक एग्जाम्पल देंगे। वही एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके इम्तिहान में आएंगे। आप पूछा जाता है वो एग्जाम्पल, तो हमें वहां तक लाने के लिए वो काम करना पड़ रहा है। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट ओवर आर्बिट्रेरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक, क्या है ये? थोड़ा देखिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का मतलब क्या होता है? नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है उसका मतलब क्या है कि हम कोई भी वेक्टर लें तो वो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। नहीं, तो हमने ले लिया कोई कैपिटल एक्स, कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक, और इस इनर प्रोडक्ट स्पेस में कोई ई आई ले लीजिए, चाहे एन ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, ई आई ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस एन, ये सबको मालूम। ठीक, और आप इसी से ये अल्फा आई डिटरमाइन करना हमारा मुख्य काम होता है। वी हैव टू डिटरमाइन अल्फा आई, और ये अल्फा आई जितना बड़ा सेट होगा उतने बड़े होंगे। नहीं, ये अल्फा आई क्या होगा कि जितना बड़ा सेट होगा उतने ही बड़े होंगे। अब देखिए कि जब आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की जगह ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है तब ये कितना आसान हो जाता है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमने लिखा ना, ये x इज इक्वल टू सिग्मा अल्फा आई पी आई, आई इज इक्वल टू 1 to n। कहता है कि हमने इनर प्रोडक्ट ले लिया कोई फिक्स्ड ईजे से। ठीक है, किसी फिक्स्ड ईजे से ले लेंगे तो ये क्या हो गया, एक्स ईजे हो गया, हो जाएगा इधर। अब आप इधर देखिए, इधर जब लेंगे तो क्या होगा, बोलिए, इधर जब लेंगे तो क्या होगा, ये इसके साथ हो जाएगा ई आई और ई जे, ये हो गया ना सिंपल। नहीं, मतलब अल्फा आई लिखा हुआ है यहाँ, अल्फा आई सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n। अब आप ये ई आई ई जे देख रहे हैं, ये ई आई ई जे क्या होगा,
जब तक आई जे के बराबर नहीं होगा तब तक ये क्या होता जाएगा, बताइए। 0। जीरो। ये क्या होगा, ये सिंपली ये ई आई ई जे जो होता है जीरो होता जाएगा। जब आई जे के बराबर होगा तभी ये आएगा। तो मतलब अब आपके पास क्या बचा, अल्फा जे बचा केवल। अब आपने देखा कि ये कितना आसान है कैलकुलेट करना। ठीक, अब हमने सिंपल एक्स को, ये एक्स ई जे अल्फा जे, जो भी अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री जो भी करना होगा वो आपका सिंपल आ गया। और ये एक्स जो है आपने क्या लिख दिया, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, इसकी जगह क्या हो गया, एक्स ई आई और ई आई, ये हो गया। अब एडवांटेज जानते हैं और क्या है इसका, देखिए इससे क्या हो गया, अब वहां पे आपके पास क्या था, वहां पे आपके पास मालूम है ना, आपके पास एन इक्वेशन नहीं, ये है क्या, अल्फा वन अल्फा टू, ठीक, ऐसे करके अल्फा एन ई एन। अब इनके लिए तो आपको क्या चाहिए, तमाम इक्वेशन चाहिए, तभी तो आप अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन की वैल्यू निकाल पाएंगे। नहीं, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका एक लाइन में ये चीजें जो है वो आ जाती है। नहीं, और इसका एक और एडवांटेज बहुत ज्यादा जानते क्या है, कि अगर हम इसमें कुछ नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मानो कि मतलब जैसे अल्फा एन ई एन तक था ना, और अगर हम इसमें अल्फा एन प्लस वन ई एन प्लस वन को और ऐड करना चाहें, तो ये जो एक्स, ये जो होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा एन प्लस वन ई एन प्लस वन। और ये भी, इसमें भी जो है हम सिंपल ये अल्फा जी को ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, वहां पे भी जो अल्फा जी होगा वो किस तरह का हो जाएगा, सिंपल यही एक्स ये और ई जे। मतलब जब भी आप कुछ नया स्केलर ला रहे हैं तो वो दैट स्केलर कैन बी ऑब्टेन्ड सिमिलरली। नहीं, आप ये देख लिया कि नहीं आपने, देखिए ये कैसे लिखा है आपने, एक्स कर एक्स प्लस अल्फा एन प्लस वन ई एन प्लस वन ई जे है ये। तो ये क्या हो गया, एक्स ई जे इधर आ गया, और इधर क्या होगा बताइए, उधर क्या होगा, अल्फा एन प्लस वन और बोलिए ई एन प्लस वन ई जे हो गया। और जे इज इक्वल टू 1 to n के लिए ये सब क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये भी अल्फा जे यहाँ भी देखिए, इस मतलब आप जितना भी जे की वैल्यू करें ये आपका यही बना रहेगा। ये एक मेन एडवांटेज है। और इसी एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए क्या किया, एक प्रोसेस दिया गया, वो कहलाता है ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन। इस पे जो है सवाल इम्तिहान में पूछे जाते हैं। नहीं, असल में यहाँ तक आने में थोड़ी देर लग जाती है। ये ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस है। ये क्या करता है, ये कहता है कि ये दिए हुए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को कन्वर्ट कर देता है ऑर्थोनॉर्मल सेट में। और जब सेट ऑर्थोनॉर्मल हो जाता है तो हम उसमें अपने हिसाब से उसके बाद मतलब उस पर एक्सरसाइज करते रहते हैं। ठीक है, तो ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइज प्रोसेस में हम कैसे नॉर्मलाइज करते हैं ये अब हम बताना चाहते हैं। राकेश सर जी सर। कह रहा है कोई समय का बंधन तो नहीं है, थोड़ा सा आधा घंटा और चलेगा, हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा बच्चे चाहें। बताइए। क्योंकि मेन चीज जो पूछे जाने वाली है एग्जाम में वो यही है। पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है, आधा घंटा और चलेगा तो? नो सर। नो सर, नो सर। नो सर, राहुल नो सर। राहुल विश्वकर्मा, अरे अरुण कुमार दुबे आप भी बैठे हैं? यस सर। अच्छा, पूछेंगे हम कल क्लास में, एक निकलवाएंगे तुमसे हैं। अभी हम बता रहे हैं कि एग्जाम्पल और क्लास में आप करेंगे कल, ठीक है। कहाँ गया, ठीक है, देख लीजिए। थोड़ी सी देर की बात है, हम अपने यहाँ तो बता चुके हैं ये बात, लेकिन ये कर लिया ना।
तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं ये बात हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद छोटा सा एक एग्जाम्पल बता देंगे, आसानी से हो जाएगा। देखिए, ग्राहम स्मिथ ने बताया कि कैसे दिए हुए उसको आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक, जैसे ये देखिए, एक्शन कोई है फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक्स, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस एक्शन को इसमें en में। तो कैसे कन्वर्जन का प्रोसेस क्या होता है, और ये कन्वर्जन के साथ देखिए, कन्वर्जन इसका इसमें कर रहे हैं तो ये आपस में भी रहना चाहिए। कुछ कैसा होगा कन्वर्जन में कि स्पैन ऑफ E1 E2 En जो है ये बराबर हो जाएगा स्पैन ऑफ x1 x2 xn। ठीक, ये रहना चाहिए, तब हम कहेंगे। तो बारी बारी से, जैसे ये एक्शन है तो आपको पता ही क्या x1 x2 xn हम फाइनाइट वाला लेके दे रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे हमें नॉर्मलाइज करना है वेक्टर को, ये x1 जो है हमने मान लिया कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो ये इससे हमें E1 मिल जाएगा। वो क्या होगा, x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x। ठीक, अब तुम्हें पता है x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1 किया तो क्या मिल गया हमें, एक ये E1 मिल गया। ये E1 कैसा होगा, नॉर्म ऑफ E1 निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक, नॉर्म ऑफ E1 निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, ऑर्थोनॉर्मल के लिए हम इसी तरह से नॉर्मलाइज करते हैं। उसके बाद हम फिर ये x2 को लिए लेते हैं। x2 को क्या लिखते हैं, x2 E1। ये क्योंकि आपके कोर्स में भी है इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी आपको बताए दे रहे हैं। ये हमने एक V2 डिफाइन किया, और ये V2 क्या हो जाएगा, x2 माइनस x2 E1 E1। ठीक, तो इसके बाद ये आपको मिलता है, देखिए V2 E1। V2 E1 का मतलब क्या हुआ, आपने इसके साथ E1 का इनर प्रोडक्ट लिया है, तो ये क्या हो गया, x2 E1 माइनस x2 E1, और यहाँ क्या आ गया, E1 E1। तो ये क्या होगा आपका, ये 1 हो गया, ये कट के 0 हो गया। मतलब V2 E1 क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। तो जो E2 वेक्टर बनता है वो इस तरह से बन जाता है, V2 अपॉन नॉर्म ऑफ V2। ठीक है, ये इसी तरह से हम E1 E2, मतलब अब आपको E2 मिल गया। E2 बराबर क्या होगा, x2 माइनस x2 E1 E1 अपॉन नॉर्म ऑफ। इस तरह से इसको हम जनरलाइज करते चले जाते हैं। ठीक है, हम सिंपल जनरलाइजेशन लिखे दे रहे हैं कि जब आपको En मिलेगा वो क्या होगा, Vn अपॉन नॉर्म ऑफ Vn, और ये Vn क्या होगा, Vn होगा xn माइनस सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 xn ei। ठीक, अपॉन इसी का नाम, ये जो Vn लिखा हुआ। इस तरह से ये En जो है, ये प्रोसेस है। प्रोसेस आपको हर क्लास में बताया ही जाएगा। हमारा प्रोसेस से बहुत मतलब नहीं था, हम केवल एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहते थे। R3 में बताएं कि R4 में बता देते हैं। ठीक, R इसमें तो बहुत सारे एक्सरसाइज में सवाल दिए हुए हैं, हमने बच्चों को अपने दिए भी होंगे। आप R4 में कर लीजिए, क्योंकि R3 में तो किताब में दिए ही हुआ। R4 में देखिए, इन R4 हमने वेक्टर डिफाइन किए, W1। ठीक, 1 0 1 0। ठीक, W2 1 1 1। हम अपने हिसाब से आसान ले रहे हैं, आप थोड़ा सा इसको कठिन भी बना सकते हैं। हम केवल वो ले रहे हैं जो हमें आपको जल्दी से कैलकुलेशन करके दिखा दें। W3 क्या है, 0 1 2 1, एंड W4 एक ले लिया, छोड़ दीजिए W4। ठीक, हमने क्या किया, यही ले लिया। ठीक, तो कहता है कि ये जो W1 W
2 और W3, ये क्या है? ये जो होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ये आप इसको प्रूव करके दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को, ये है ना लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हम आपको दिखाएं, आपको इसीलिए हमने देखिए बनाया ही ऐसा है। आप कुछ भी देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ये वाला देखेंगे, ये ऐड किया, ये ऐड किया, ठीक, यहाँ पे घट जाएगा और यहाँ पे फिर ये बना लिया। ठीक है, तो ये आप सिंपली देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑल अल्फा आई, मतलब क्या, सिग्मा अल्फा आई ई आई इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट अल्फा आई इक्वल टू 0, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक, स्पैन भी करेगा। ठीक, स्पैन करने का मतलब क्या है कि कोई भी वेक्टर आप इसमें से लें वो दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाएगा, और आप ये करके देख भी सकते हैं, देख लेंगे ना। जैसे 0 1 2 1 है, इसको यहाँ कुछ अल्फा 1 1 0 1 0 प्लस अल्फा 2 1 1 1 1, ठीक, इससे अल्फा 1 अल्फा 2 की इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, इसलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अब हमारा काम क्या था कि हम कैसे आपको बताएं कि ये अब जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इसको कंप्यूट करके ऑर्थोगोनल वेक्टर्स v1 v2 और v3 निकालने हैं। तो हम कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, तो पहला वाला जैसे हमने बताया था ना, पहला वाला तो एकदम आसान है कि v1 अगर है, v1 क्या होगा, w1 के बराबर। ठीक, क्या है, 1 0 1 0, ठीक, ठीक है, ये तो आपका हमने v1 बराबर w1 ले लिया। ठीक, अब v2 क्या है, v2 क्या है बताइए, w2 माइनस w2 v1 अपॉन नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर। ठीक, ये निकालने के लिए बता रहे हैं, जब आप इसको निकालेंगे तो W2 क्या है, 1 1 1 1, ठीक, और उसका इनर प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, देखिए इनर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 आया ना, ये 4 का मतलब क्या हो गया, 2, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। तो ये क्या हो गया, 2 अपॉन 2 1 0 1 0, और ये आपने निकाला क्या आ गया, 0 1, नहीं -1 आएगा ना, ये किसके बराबर आएगा, देखिए घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाई कितना है, इसको इससे घटा के देखिए क्या आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी, एक में से एक घटाएंगे, हाँ एक में से एक घटाएंगे 0 हो गया। ठीक, 0 फिर ये 1 फिर 0 और 1, ये v2 निकल आया। ठीक, इसी तरह से हम v2 की बजाय, आपको v2 को ध्यान रखिएगा, हम अभी आपको v3 दिखा रहे हैं। इसको ठीक करके हम आपको भेजेंगे, आपको पहले मिल जाएगा कोर्स खत्म होने से पहले। अब देखिए v3, ठीक, v3 बराबर क्या होगा, v3 बराबर होगा w3 माइनस इनर प्रोडक्ट w3 v1 अपॉन v1 का स्क्वायर माइनस इनर प्रोडक्ट w3 का किसके साथ, v2 के साथ, जो आप निकाल चुके हैं नॉर्म ऑफ v2 का स्क्वायर। ठीक, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा v1 और यहाँ पे क्या होगा v2। अब देखिए आप निकाल सब चुके हैं, w3 तो आपको पता है, w3 क्या दिया है, भूल गया, पिछले वाले पेज में था ना, क्या लिख दिया था बताइए, w3 क्या था, एक आदमी कोई पीछे किसी ने लिखा है, सर 0 1 2 1 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने w3 का w1 से इनर प्रोडक्ट नहीं निकाला था, ये इनर प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, ये तो 2 था ही, ये तो बदलेगा नहीं, ये इनर प्रोडक्ट कितना आ जाए, आएगा 1 0 1 0, ठीक, ये इनर प्रोडक्ट 2
अपॉन 2 और ये V1। इसका इनर प्रोडक्ट निकाला आपने, वो भी वही था 2। और देखिए V2 आपने पीछे निकाला था ना, जो V2 निकाला था वो क्या था 0 1 0 1, है ना। और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, और ये कितना आ गया 0 1 0 1। ठीक, अब इनको जब घटाएंगे कुल मिला के तो कितना आ गया, देखिए 0 1 2 ये, यहाँ पे 1 0 ये है और यहाँ पे 0, तो पहले वाले में कितना आएगा -1 आ गया। अरे ठीक है, ये क्या हो गया -1 0 1 0। ठीक, तो इस तरह से आप जो है ये U1 क्या होगा V1 अपॉन नॉर्म ऑफ V1। ठीक, ये कितना हो गया, नॉर्म ऑफ V1 का मतलब क्या हो 1 अपॉन √2, और ये 1 0 1 0। इसी तरह से आपने U2 निकाल लिया, U2 क्या होगा V2 अपॉन नॉर्म ऑफ V2। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन, वहां स्क्वायर थे ध्यान रखिएगा, 0 1 0 0 1। इस तरह से, इसी तरह से U3 भी निकाल लेंगे। ये जो है ना, ये ऑर्थोगोनल जो ये ऑर्थोगोनाइजेशन प्रोसेस है, इसमें इन दिए हुए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट से ऑर्थोनॉर्मल सेट निकालने की बात जो है वो पूछी जाती है। कभी कभी एक दो सवाल आ जाते हैं, कभी कभी एक ही सवाल आता है, लेकिन आता जरूर नहीं। ये असल में है थोड़ा सा लंबी चीज है, हम केवल ये चाहते थे कि कुछ एक आध सवाल की बात तो हम लोग कर ही लें, नहीं, क्योंकि एनालिसिस जो है बड़ी चीज है, थोड़ा ज़्यादा देर तक बाकी सर लोग हैं आपके, तो हमें लगता है कि कुछ आप एक दो सवाल करेंगे तो आपको इसमें अच्छा लगेगा, कि क्योंकि जो मैथमेटिक्स जो है वो वैसे भी दिमाग के एक्सरसाइज के लिए होती भी है।